Doctors continue to reclaim the night star. Protesting doctors and medical staff of the RG Kar Hospital are giving tribute to Abhaya with flowers and candles in front of the emergency building of the RG Kar Hospital, where the crime happened exactly a month ago. The Apex Court is to hear the Kolkata horror case today. Justice for Abhaya chorus continues. Has not been delivered yet. And in protest of this incident, this brutal incident, entire civil society of Kolkata has come down on road. They're protesting against RG Kar Hospital incident. They're chanting slogan of justice. They're chanting slogan of Azadi. Right now we are present at Jadavpur 8 area in Kolkata, which is in South Kolkata area. And the students, all the students, the youth generation and entire civil society has come down on road seeking justice. They're demanding justice. So you can see the entire civil society, including the students and youth generation, has come down on the street of Kolkata. They are seeking justice. They are demanding justice, and they're chanting slogans of justice. They are singing songs. They are performing arts. They are painting on the roads. In every way possible, they are protesting against the RG Kar incident, which took place just before 1 month, and they are demanding justice. The protesters are hopeful they will get justice. With camera person Tapan Nashkar, this is Rajesh Shah for India Today, Kolkata. Ritik Mondal getting in more details. Ritik, exactly a month ago, this horrific crime took place in Kolkata. However, the students continue their stir. Medical students, young doctors, not just that, the general, people in Kolkata, not just Kolkata, outside of Kolkata as well. The sentiment is that justice has to be done and that there has to be speedy justice, most importantly. Definitely. Good morning, Sneha. First of all, the city of joy, that is Kolkata, now full of anger. They had hit the streets again to seek justice for the rape and murder of a young doctor that took place nearly a month ago. And let me tell you, last night, Sunday night, was once again, we did see an unprecedented night of many of the citizens. They foot marched, and at many locations foot march were held yesterday, and many of the senior citizens, they also stayed overnight on the streets, and even let me tell you, artists of Kolkata's famous Kumatuli, and they also carried a protest march last afternoon. And of course, Kolkata's iconic hand rickshaw pullers, over hundreds in number, they also joined, echoed the same voice that we want justice on the streets of Kolkata, held a rally from Kolkata's College Street to Dharmtala. So we can see across all length and breadth of the society, now they are wanting a speedy justice. Now today is a very interesting and significant day. All are eyeing at the Apex Court, where the matter of the RG Kar will be heard today once again. And now people of Kolkata and the entire state, they are really waiting for a status report from the CBI, which might reveal or give a direction towards the clarity that what exactly happened, how the 31-year-old medic was brutally murdered and raped inside the government hospital. But we do see and do realize that during this overnight protest, it's bringing anger and it's mounting pressure on the ruling dispensation. Remember, yesterday, Jawahar Sarkar resigned from his post as the Rajya Sabha MP, is bringing more embarrassment for the ruling dispensation. Back to you. All right, I'm going to thank you, Ritik Mondal, getting us up to speed with those details this morning, even as a stir, in fact, in Kolkata continues. And staying with Kolkata, a news tightening on the former RG Kar principal Sandeep Ghosh. A Supreme Court bench consisting of Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud, Justices J.B. Pardiwala, Manoj Misra, slated to hear the matter in the RG Kar rape and murder horror. This after the initial hearing on the 22nd of August took place when the top court took suo motu cognizance of this case. Meanwhile, India Today has exposed RG Kar funds looted by ex-principal. As per sources,
Sandeep Ghosh's close aide and personal bodyguard, Afsar Ali, was also arrested by CBI, played an alleged role in corruption by siphoning funds, altering bills for Ghosh. Kolkata police has filed an FIR against 3 close aides of Ghosh, Dr. Virupaksha Vishwas, Dr. Avik Dey and Dr. Ranjit Saha, for allegedly threatening a junior doctor. Meanwhile, streets of Kolkata filled with endless demonstrations. People demanding justice there for Abhaya. देखिए, हम लोग तो उम्मीद में है ऐसा ही कुछ जजमेंट आने वाला है। जो कल्प्रिट इसका पीछे है उसका ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करके इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को रिपोर्ट देंगे। उस रिपोर्ट के वजह से कड़ी सजा होगा और कैपिटल पनिशमेंट होगा। और इससे पहले हम जो सोच रहे हैं ना, कुछ आदमी इसका कोई डॉक्टर और जो वीडियो में दिखाई दे रहा है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगा। जो लोग वीडियो में एविडेंस टेम्परिंग करने का कोई सस्पेक्ट कर रहा है, इधर का जो डॉक्टर है वो लोग सोच रहा है इनके खिलाफ भी कोई एक्शन होने वाला था शायद। जगन्नाथ सरकार नहीं लिखे हैं, ये लिखे हैं हमारे पुरुलिया का सांसद ज्योतिर्मय महातो। बस यही लिखे हैं। मैंने तो वही बात बोला कि असली जो विक्टिम है वो विक्टिम को पकड़ा जाए। हम लोग मच्छर पकड़ रहे हैं, हाथी को पकड़ना चाहिए। जो इसके साथ जुड़े हैं संपर्क इसलिए है कि वो स्वास्थ्य मंत्री है। स्वास्थ्य मंत्री जब होते हैं तो नाता तो उनसे तो डायरेक्ट उसको इन्वेस्टिगेशन किया जाए। बात क्या है, दाल में कुछ काला है या नहीं, चिट्ठी तो और भी बाकी है। अभी तो शुरुआत है। कितने सांसद लोग, कितने विधायक लोग, वो समय की अपेक्षा के लिए हम लोग अपेक्षा। सुप्रीम कोर्ट की तरह आस लगा के बैठे हुए हैं और लोग डर भी रहे हैं कि हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जैसे बड़े बड़े वकील जजमेंट को डिनाइड या नहीं तो डिलेट कर देते हैं, तो ऐसा ना हो। पॉलिसी का विरोध रखना के मात्र इससे काम चलने वाला नहीं है। भारत सरकार ने भेज दिया, उनका रिजाइन लेटर अच्छा है कि उनका गलतफहमी दूर हो गई, किसी का कल्चर क्या है उन्हें समझ में आ गया। तो ये छोटा रिजाइन से काम चलने वाला नहीं है, इसलिए हम लोग सीएम का रिजाइन मांग रहे हैं। Listening now to this old audio conversation allegedly of Sandeep Ghosh's aide, Dr. Virupaksha Vishwas, in which he can be heard threatening a junior doctor. ডাক্তার কবে হবি? মানে তো পাস কবে করবি? ইন্টার্নশিপ কবে? তো ইন্টার্নশিপ কমপ্লিট হবে মে মাসে। তার যদি সার্টিফিকেটটা না পাস তাহলে কি হবে? কেন করবি তো 10 বার করে মেডিকেল কাউন্সিলে? কেন নিরপেক্ষতা বলছি। আমি তো কিছু করিনি দাদা, কেন কি হয়েছে? বিএসএ করিস? আমার নাম বিরূপাক্ষ বিশ্বাস, না শুনেছিস? শুনিস? না তো দাদা। শুনবি সময় সঙ্গী। তুই বিএসএ করতে চাস কি করিস না করিস আমার ভুলি কোনো মাথা ব্যথা নেই, ঠিক আছে? কর ভালো করে, যা করার কর, কিন্তু কলেজের বাইরে কর, 1 নম্বর। দ্বিতীয়ত তুই যদি কথা না শুনিস আমি তোকে 2 বার ফোন করবো না, কাউকে 2 বার ফোন করি না। তো আমি কে সেটা তো প্রিন্সিপালকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে নিবি। প্রিন্সিপাল আছে, ডিন আছে, আর কে আছে তোর কলেজে জিজ্ঞাসা করে নিস। তৃতীয় কথা, ঠিকঠাক কথা না থাকলে তোর রেজিস্ট্রেশন আসতে দেবো। কি হয়েছে এটা মাথায় রাখিস। ঠিকঠাক না থাকলে তোর রেজিস্ট্রেশনটা আটকে দেবো, এরকম তুই আমার গ্যারান্টি দিস, ঠিক আছে? 1 বছর কোর্টে করবি, চাস এসব আমি যাস না কোনটা? আর আমার নামে যদি কমপ্লেন করতে হয় নামটা লিখে নে, ডক্টর বিরূপাক্ষ বিশ্বাস। আবারও বললাম তোকে আমি, ঠিক আছে? তোর মেইন বয়েজ হস্টেলই তুলে দেবো আমি, 500-600 ছেলেকে নিয়ে গিয়ে। সব এমবিবিএস পড়ে, বাইরে ছেলে ঢোকাবো না। এমনি মরে যাবি তুই, কেন করছিস এগুলো?